A dhatu that has the indicated letter E takes num. So kuthi has the indicated letter E, right? So we will insert num. Now num has maram as indicated letter. So Antya Sarveshwarat Paramitah Sthanam will be applied. And we will insert num after the last Sarveshwara and kuthi. So that's u. So kunt, then Avishnupadadasya Nasya Masya Cha Vishnu Chakram Vaishnave, and then Vishnu Chakrasya Hari Venu Vishnu Varga Vishnupadadasya Tuva Kunt. So we get kunt. Then tip Shab Krishna Dhatu ke kuntati. Kuntatah kunthanti ityadi. Then kuthi, this is karmani. This num is applied by iramit dhatu num. So we get kunt, yak, te. So we get kunthyate. Kunthyate, kunthyate, kunthante ityadi. One second. से कुंथ्येथे कुंथ्यत्वे कुंथ्ये कुंथ्यावहे कुंथ्यामहे चु चुकुंठ चुकुन चुकुंठ चुकुंठ Okay, then kuthi, now adhokshara. कुथी वर्गनरस्य च वर्गः अच्छा प्रभु म्यूट हो जाइए आप फिर या फिर बोलिए मत आवाज आ रही है कुथी adhokshara so again kuntha nom is inserted then reduplication is done सर्वेश्वर पर्यंत धातु निर्वचनम अधोक्षर संज्ञांशो सर्वेश्वर पर्यंतस्य आदिभागस्य अनरस्य निर्वचनम so we get ku kunt and a of null. Then we apply this sutra ka varga narasya cha vargah. The ka varga of a nara changes to cha varga. If we have ka varga in nara, like ka is a ka varga letter, then it will change to the corresponding cha varga letter. So ka will become cha. So we get chukuntha. Chukuntha. Chukunthatuhu chukunthuhu. So that was kuthi dhatu. Okay. Next is shidhu gatyam, which means to go, to move. Dhatvadehi shah sah. The initial sh of a dhatu changes to sa. Like shidhu begins with the murdhanya sh, but the sutra says whenever we have a dhatu beginning with sh, it will change to sa, dante sa. That's the general rule. Then Sarveshwara Dantyapara Dhatoradi Sah Shopadesha. Any initial sa which belongs to a dhatu and is followed by a Sarveshwara or by a dental varna is Shopadesha. Since people in general are usually familiar only with the form of a dhatu that has already undergone the change to sa by dhatva sa, this sutra and next two sutras are given so that one may recognize of which of the dhatus that begin with sa originally begin with sha in the dhatu part. By knowing this, one can then apply Sutra 350. An example of initial sa followed by a Sarveshwara is save. Okay, so basically, see, some dhatus are there in the dhatu part which begin with sh, and then that sh changes to sa by the previous rule. And then there are some dhatus which originally begins with sa, dantya sa, like save dhatu, which is listed in the dhatu part as Shevri Shivne, an example of initial sa.
स्था 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 Oh, I'm sorry. Save is shave. The next sutra gives the list. Swashka Swida Swada Swanja Swapa Spingang Cha. The initial sa of the following dhatus is also Shopadesha. So, hmm. Prabhuji, what is Swapadesha? Can you please repeat it again? Yeah, yeah. Okay. So, Sha Upadesha. Shopadesha means when. Okay, so Shopadesha means if we have a dhatu, let's say Shidhu, the next one, which originally begins with Sh. And then by this rule, Dhatva Shahasa, that becomes this. So this change of Sh into Sa is called Shopadesha. This is called Shopadesha. And then there are certain dhatus which originally begin with dental Sa, Dantya Sa. Those are not Shopadesha. It's like if you remember Anishwara Dapi Ra Ramajaha, that sutra, Sandhi Sutra, that there are Visarga, Vishnu Sarga, which are born of Ra Rama. And then there are certain Vishnu Sargas which are naturally there, maybe. Something like that. So when Sh changes into dental Sa, that is Shopadesha. And when the dhatu begins with dental Sa, then that is not called Shopadesha. So Sutra 348 also tells the dhatus which are Shopadesha. And then Sutra 349 tells the exceptions. The dhatus which originally begin with Dantyasa. All these. Yes, Prabhu. आप म्यूटेड हैं प्रभु. प्रभु जी अहम पृच्छत्वम हम्म. सूत्रे 46 अधिक त्रिशत त्रिशते द द अन्त्यशब्दे सह इति किम विष्णुभक्ति चेत ओके. धात्वा चेत धात्वादेश. हम्म. चे चेत 1.1 इति विष्णुभक्ति कार्य तो प्रथमा वाच्य. प्रथमा. किंतु किंतु प्रभु चेत चेत द प्रत्यय सु सु हम्म. कस्मिन् कस्मिन् उ उ इति अक्षर इत् अनुबंधन स इति शेष. तो ततः ततः if we apply स इति Prabhuji, प्रातिपदिकं सु इति प्रत्ययः. स इति प्रातिपदिकं तत्र सु प्रत्ययस्य योजनं भवति. तत्र तर्हि सररामे विष्णु विष्णुतान्ते सः नहीं धात्वादेशः सः. प्रभु जी वो जो फर्स्ट वाला है इसमें तो इसके साथ वाउल तो आता नहीं ना पर क्या नहीं आता? वाउल
सर्वेश्वर। वो उच्चारणार्थे ग्रहणीयम। ओके। आम। उच्चारणार्थे। अस्तु। हम्म। एंड प्रभु जी, इफ चेत शोपदेश इति धातु पाठ, धातु पाठ इते शराम लिश्च भवति। जयराम किम। वेट प्रभु जी, कॉल कॉल कट किया। प्रभु जी, इफ लाइक if the wait प्रभु जी, if the Shopadesha is the list in the Dhatu part, which is Saram Sharam. So then in the Sutra 348, the initial S of the following dhatus is also Shopadesha. अब मतलब प्रभु जी इसका हम्म। मतलब नहीं समझ आया, मतलब जो स है पर ये भी शोपदेश है। अर्थात तो इस सूत्र में so the dhatus mentioned in this sutra they also begin with sh which turn into sa by dhatu adesha sa. ओके, So तो धातु पाठ में Sanshotni ऑलरेडी दिए हैं। clarifies. Thus in the dhatu part these dhatus are listed as shwashka, shvida, all beginning with the murdhanya sh, shvida, shvada, like that. अस्तु। Hmm. And Sutra 349 tells the dhatus which are not shropadeshas, they are simple normal dhatus, beginning with dantya sa, dental sa. Okay, the S, the initial S of the following dhatu is not okay. And Prabhuji, what would be the like pronunciation of this Sutra 349? Yeah, so Sripri is Sripri Sri Stya Sucha Sutrasthana Sangrama Sara Sama Sabhaja Sekristena Stoma Varjam. Oh, no, Yeah, Sri Stya Sucha Sutrasthana Sangrama Sara Sama Sabhaja Sekristena. All these dhatus are mentioned. So the uh, next dhatu is प्रभु प्रभु uh, uh, किम कर्तव्यम uh, इति धातु धातु लिस्टे। किम कर्तव्यम धातु लिस्ट है। Yes, प्रभु जी। So what are we have to do with this list? Yes, प्रभु जी, yes. That is he's asking. Oh, oh, thank you for the translation. No, no, no. It's just giving the list of dhatus which are not Shopadesha. That's all. Yeah. This is just a list. We Nothing to do. Just need to know. Okay, these are the dhatus which are beginning with Dantya sa only, not sh and turning into sa. Hmm. Okay, so the next dhatu we'll do is Shidhu Gatyam, which is beginning with Murdhanya Sh, and then we apply dhatu adisha Sa, so it becomes Siddh. And then Tip Shav Krishna dhatu ke Langu Divasya Govinda, so we get Sedhati. प्रभु Sedhati. जी, which धातु, where is it written प्रभु जी? The ऊपर प्रभु जी जहाँ पे इसका मीनिंग लिखा हुआ है, जहाँ पे पैसे लिखा होता है दैट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। लिखा हुआ था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। कहाँ लिखा है? 350 350 आप बुक स्क्रॉल कीजिए। 350 का वो ट्रांसलेशन। 350 पे। 345
345 class line. ओके, धातु सिद्ध शिद्धवु गत्याम, शिद्धु गत्याम। Okay, Sedhati. Then Upendradapi Shopadeshasya Shatvam Kvachit. Sometimes even after an Upendra, a Shopadeshasya changes to Sh. So kabhi kabhi, so sometimes when we have an Upendra like Praparap of Saman Vava Nir, that all 20 21 of them, Pra, Para, Apa ityadi. So if, after an Upendra, if the requirements of Shatva Vidhi are being fulfilled, Ishvara Harimitra Ka Ramangebhya Pratyavrinkti Sasya Sho ityadi, then that Shopadesha Sa will again change to Sh. Like, for example, originally the dhatu is this, Shridhu. Then by applying Dhatu Adesha Sa, we did this, Siddh. Now let's say we have an Upendra Ni, prefix Ni. So now Ishvara Harimitra, after an Ishvara, if we have Sa, then Sa will change into Sh. So Upendra Tabi Shopadeshasya Shatvam Kachit. ओके, So now again it will turn into like this. Again, dental Sa Varna, Dantya Sa will turn into the Sh, Murdanya Sh. If it meets the requirement of 108, Shatuvidhi, Ishvara Harimitra Karamang Epya. The word Nishedh actually comes from this, Ni plus Shid, Shid Dhatu. Pratishedh, Nishedh, right? So Nishedhati, Nishedhati. Then फिर निषेधति का Ni, क्या मतलब हुआ फिर? अकम्प्लिश्ड वो डाउन, आप डिक्शनरी में देखें. नी मींस डाउन। निषेध नहीं, ऐसे नहीं होता है, वो डिक्शनरीज में चेक करना होता है उनका क्या मीनिंग है. तो लेट्स से निषेध, तो यहाँ देखिए निषेध के क्या अर्थ हैं, या फिर एक्चुअली निषिद्ध. बेटर लुक एट दिस धातु रूप. टू ड्राइव अवे, कीप बैक, वही निषेध करना. टू प्रिवेंट, टू प्रोहिबिट, टू कीप डाउन, सप्रेस. तो ये सारे अर्थ हैं. प्रभु जी, सिद्ध से तो ऐसा ऐसे माइंड में आ जाता है, मतलब सिद्ध करना ऐसे, पर पर नी प्रीफिक्स हो गया ना. प्रीफिक्स प्रभु जी लगने से जैसे अर्थ अर्थ. इफ प्रभु जी चेत चेत अ, धातु अर्थे अ, अ, शिद गत्याम टू गो इति, ततः किम धातुम किम धातु फॉर सिद्धाय, किम धातु सिद्धाय, किम धातु किम सिद्धायति. धातुम, हाँ, कः अर्थः भवतः प्रश्नस्य, अहं ज्ञातुं न शक्नोमि. किम धातुम सिद्धाय, वट विल बी द धातु फॉर सिद्ध, सिद्ध मतलब सिद्ध, जो हम कहते हैं सिद्ध, सिद्ध कर दिया, अच्छा अच्छा. परफेक्शन, दैट जो मीनिंग आम होता है। आम. तदपि शुद्ध धातु अस्ति. सिद्ध, दिस इज द सेम धातु। साधनोति, सिद्ध्यति सिद्ध्यति. दिस वन, शिद धातु. प्रभु जी पर शिधु. ये तो वही धातु है। नहीं नहीं, सेम दिखने में वो सेम होते हैं, पर वो अलग गण में होते हैं, अलग अर्थ में होते हैं, तो अलग धातु है. आई मीन लुक, अच्छा, दिखता इसका सेम है पर अलग है. अनुबंध भी है, इसका अलग होगा। शितु शास्त्र जैसे अभी हम जो कर रहे हैं वो ये वाला है ना, इसमें रूप दिए सेधति. सिद्धति, हाँ।
और जो आप वो सिद्ध्यति बोल रहे ऊर्ज। हैं वो सिद्ध्यति वो यहाँ है। आई थिंक दैट इज दिवादी। चेक करना होगा, दिवादी गण होगा, लिखा हुआ है ना फोर्थ। वादे दादी जो होती आती दिवादी, वो दिवादी गण का धातु है, फोर्थ कैटेगरी। 4p परस्मै पद। हाँ, हाँ, फोर भी मतलब पर, फोर्थ गण एंड परस्मैपद पद धातु। तो ऐसे होते हैं, दिखने में वो सेम होते हैं पर अलग अलग गण में और अलग अलग अर्थों के धातु होते हैं। Prabhuji, in the previous अस्तु प्रभु जी। in the recording, you showed that you referred to some for dhatu root. You refer to some other dictionary to find the dhatu root. Acha, no, that is actually, I don't know why that file is not working in this dictionary on this computer. Uh, but that's in my separate system. So I think I प्रभु shared जी, the files. इन कोश वेबसाइट हम्म। धातु वहां पे शो हो जाते हैं। कोश कोश नाम की वेबसाइट पे हो जाते हैं। आप लिंक शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। ग्रुप में आप लिंक शेयर कर देना ताकि बहुत लोग देख पाए। मेरा नेटवर्क। ठीक है, सो लाइक दैट, नी प्लस शिधु, दिस इज भूतेश, भूतेश्वर। सो धातु पूर्वमत शब कृष्ण धातु के, लघु दिवस गोविंद एंड इद्वस, इद्वसयः सर्वेश्वरे, इद्वमेव यः सर्वेश्वरे, and we get न्यषेधत bhuteshwar when we have ni as a upendra upasarga. Okay, then swarati suti suyati dhuyudeta idva. Now this is the first time we will see the usage of it optionally. Till now we were applying it ram dhatu ke regularly everywhere wherever it was occurring. Now we'll see the optional usage of it. So swarati suti suyati dhuyudeta idva. After sri dhatu, shwing dhatu, shum again, then dhu dhatu, and after dhatus that have the indicator letter U, like Shidhu has the indicator letter U. It is optional. Wherever it has to be applied, so it is optional. For example, Shidhu plus Dik Dhatu Puramat, this is Bhutesha. So once we insert it and we get the form Asedhit, like previous forms, Asedhit. And once when we don't put it, so then we'll see the next sutra. Uh, And then Shidhu plus Tam. So Prabhuji, that which says in Anubandha, oh, that is optional. What is optional? yes, it is optional. It okay. So Shidhu plus Tam, Dhatu Puramat, Sirbhuteshe. When it is inserted, so we get Asedhishtam. Lagudvasa Govinda, Ishwara Harimitra, Shatprasya Tavargasya, and we get Asedhishtam. Okay, questions towards the end. So Asedhit, Asedhishtam. Now when we don't apply it like the Anit Paksha, then we have this sutra. Vishnu Jananta Nam Anitam Vrishnindraha Sauparapade. Anit dhatus which end in Vishnu Jana, like Shidhu ends with Vishnu Jana, take Vrishnindra when C, which is followed by a Parapada Pratyay, follows. So Shidhu plus the Dhatu Purvamad. Now Anit Paksha, when we are not inserting it. So now according to this sutra, if we have C following a Dhatu ending with Vishnu Jana, and if C is followed by a Parapada Pratyay, then we do Vrishnindra in the Dhatu. So the Uddhava takes Vrishnindra. So Idvayasya Ai. Idvayasya Ai. And then
We apply Yadava Matre Hari Kamalam, and yes, and we get a side seat. A side seat. Then, whoa. Okay, I think I'll stop here because I mean I can easily do, but uh, there are a few more important sutras just to complete this Shidu Dhatu. Hmm. So yeah, please complete till here. Yeah, keep memorizing the tables of all the dhatus which we are covering, which we have covered till now. Yes, questions. प्रभुजी इदानीम इदानीम तत् धातु नवधातु सिद्धू with a trivikrama u. It's idam भिन्न पूर्वात् धातु सिद्धू एकमेव शिदु शास्त्रे मंगले. सिद्धू शास्त्र मंगले एकमेव. शास्त्रे मंगले अपि अपि प्रभो द अस्तु 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 शिदुगत्यां शिदुगत्यां धातुः आम् अस्तु अस्तु शिदुगत्यां शिदुशास्त्रे माङ्गल्ये धातोः पृथक् अस्ति. to instruct to species okay अनुशासन अपि प्रभो भूतेश प्रत्ययानि डिफिकल्ट सन्ति आम् सन्ति एव. प्रभो चेत चेत if भवतः if भवत if भवान चेत भवान with the like notes writing if you could instruct us. अत्रैव जीवगोस्वामिना दत्तं नोट्स् What question? वृत्तिमध्ये वृत्तिमध्ये दत्तम् अषेदित् असैत्सीत् असेदिष्टाम् असैत्थाम् अत्रैव दत्तं. मया किमपि पृथक् न दातव्यम्. सर्वमपि दत्तम् अत्र. सूत्रसङ्ख्यादिकं रूपादिकं सर्वमपि PDF मध्ये. प्रभो च किं किं वयं कर्तव्यम् अन्वय भवान told us that we will do after memorizing the dhatu pratyas. अस्तु अस्तु. अस्तु अद्य वयं दशमस्कन्धस्य
श्रीमद्भागवतस्य दशमस्कन्धस्य प्रथम अध्यायस्य तृतीय श्लोकः कुर्मः। अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। भगवान् भूतभावनः विश्वात्मा यदोः वंशे अवतीर्य, यदोः वंशे अवतीर्य, अवतारं गृहीत्वा अवतीर्य, यानि कृतवान्, यानि कर्माणि कृतवान्, यानि लीलादिकं कृतवान्, यानि कृतवान्, तानि कर्माणि नः, नः इति अस्माकम्, अपि च अस्मान् द्वितीय बहुवचन, विस्तरात् वद, टेल, विस्तरात् वद। तो पुनः एव भगवान् भूतभावनः विश्वात्मा श्रीकृष्णः यदोः वंशे अवतीर्य, अर्धविराम, यानि कृतवान्, यानि कृतवान् इत्युक्ते यानि लीलानि, लीलादिकं यानि कर्माणि कृतवान्, अकरोत्, कृतवान्, भूतकालस्य प्रयोगः, तानि नः अस्मान् विस्तरात्, विस्तारपूर्वकं वद, कथय। अस्तु। प्रभुजी वद इति किम किम आख्यात विधात्री, प्रत्यय विधात्री 2.1 आम्, and then the sutra applied Adaram Gopal. No, then the sutra अतो applied अतो with अतो हेरहरः, अतो हेरहरः। Ato Her तो hearer. Oh no, no, Prabhuji. Like why Vadaha? It should be like the Visarga dropped now because after Gopal came. भवान् स्वयमेव विरोधास्पदं प्रश्नं करोति। प्रथमं भवान् एव वदति आख्यात इति, तर्हि भवान् एव वदति विसर्गः, शब्दः इति। No, Prabhuji. आख्यातः इति। Prabhuji, like Bhava. तुक्तावन्तु हि 2.1। Okay, he dropped. Yes, yes, Prabhuji. It was not Visarga. Yes, Prabhuji. Astu Prabhuji. Astu. निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् भवौषधाच् श्रोत्र मनोभिरामात् क उत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। अस्तु, अत्र कः पुमान्, कः पुमान्, कः पुरुषः इति, कः पुमान् उत्तमश्लोकगुणानुवादात् विरज्येत, अपि च Okay. पशुघ्नात् विना कः पुमान् उत्तम श्लोक गुणानुवादात् विरचित इति मुख्यः वाक्यः अस्ति अस्मात् श्लोकात्। पशुघ्नात् विना कः पुमान् उत्तम श्लोक गुणानुवादात् विरज्येत। इदानीं तु उत्तम श्लोक गुणानुवादस्य किमपि विशेषणं दत्तं, तत्र कीदृशः उत्तम श्लोक गुणानुवादः? निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् इति उत्तम श्लोक गुणानुवादात्
So, what are the adjectives for such Uttama Shloka Gunanuvad? So the adjectives given are first Nivritta Tarshai Rupagiyamana. That's one adjective for Uttama Shloka Gunanuvadat. Second, Bhavaushadhat. That is second. Bhavaushadhat 5.1. That's second adjective. Then third, Shrotra Manobhiramat. That's third adjective. So, except for a killer of animals, Pashugna, who, which man or which person, Kahapuman, will cease, will stop from hearing the glories, the qualities of the Lord Uttama Shloka. And now those glories are Nivritta Tarshai Upagiya Manad. They are constantly sung Upagiya Manad by Nivritta Tarshai, by those who have no hankering within themselves, who are free from all kinds of hankerings. Basically, the liberated, the Mukta Jivas. Nivritta is free. Trisha refers to Trishna, thirst, desires, hankerings. So those who are free from all kinds of hankerings, they always sing such Uttama Shloka Gunanuvad. Then what more? Bhavaushadhat. Such glorification of Lord is the medicine, the aushadh, which will help us cure the material disease, bhava bandhana or bhava, yeah, the disease of material existence. And third, such gunanuvad glorification is shrotra manobhiramat. It gives pleasure to the mind and to the ears. So who will attempt to cease from listening, from hearing to such qualities, such glorifications of Lord Uttama Shloka, except for Pashugnaatvina. Pashugna, killer of Pashus, animals. Or Pashu also refers to soul, like the Acharyas give some points here of Pashugna in the commentaries. Prabhuji, in Anvaya, is there some rules basically how we should proceed? First, find Kriya, action, action word, and then everything will revolve around that action word, that verb. Who, what, by which, unto whom, from, like that. So you will have to build up questions and we'll have to check what fits in where. So first of all, you have to look for the action word, verb. Then second, you look for subject, the doer. And then third, the object. These are the three main points. And then rest, we have to like figure out. Verb, so kriya, karta, karma. Kriya, karta, karma. Like in sequence, I'm telling. Kriya, karta, karma. When we are figuring out. And one another thing is Sanskrit is full of usages of lots of adjectives. Like in this verse only, we have three adjectives for this word Uttama Shlok Gunanuvadat. So we have to be very open or like welcoming. We should be ready that there will be a lot of adjectives whenever we read verses. So to be able to figure them out. And how will you figure them out? By the endings. You see, all of them, they will share the same endings. So this is also one of the important things. So if you're good at, doing adjectives things, then I will say that 20, 30% Anvaya you have learned just by learning this adjective trick, by figuring out the endings, matching them. So adjectives, that's why we have a special section in the book, right? Before Krishna Nam Prakaranam, Visheshana Visheshya Bhag, that 9, 10 sutras, if you remember.
Yes, Manas Prabhu. प्रभो अहं पृच्छितुम् इच्छामि अ, तत् तत् अ, अभिराम अभिरामात् इति इति विष्णुपद इन् द्वितीयपदे तत् लैक् इव चेद् वयं भिन्न अभि इति उपेन्द्र वयं प्राप्तः अपि रामात् प्राप्त अपि चेद् वयं द्रष्टुं द्रष्टुम् अर्थे अभि अभि मीन्स हायर राम मीन्स राम रमति सो ततः टू कंक्लूड वयम please tell me Proji if it is right or not that abhi means higher ramat means to revel according to the dhatu so to means reveling uh, reveling in the glorification maybe in the higher of it I don't know maybe No. You simply go and look into the dictionary. Abhiram means to dwell, to take delight in something, be delighted, to become happy, to gladden, to delight in, to be delighted. So these are the meanings of Abhiram. So see, one thing is that individually we can see, listen, read some meanings for the upasargas, and then individually we can also know the meanings of the dhatus. But when we have different combinations of prefixes, upasargas with different dhatus, then the meaning changes like anything. We can't even imagine out of our imagination. Then we can't say, oh, Prabhu Abhi means this, Ram means that. No. And then combination of those meanings. No. When they combine, they can mean something opposite, which we can't even think in our 10 lives. That's why taking shelter of the dictionaries is must, especially for the Upendra, the Upasarga Vidhi. This Upasarga thing is very, very deep. I must say that learning dhatus, without usages of prefixes is much easier than when it comes to using upendras or upasargas with the dhatus or with the nouns also. I mean, dhatus are in themselves difficult if we compare it with chapter 2. But if Mhm. we see and consider the upendra vidhi, the upasargas, the usages, the meanings, then it is way easier. Only the dhatus and the 180 forms for each dhatu. So upasarga Mhm. vidhi is very deep. That's why we should take shelter of the dictionaries for the right meanings. Otherwise, it will take a lot of time for us, and we won't be able to make the meaning also. Best is come to the dictionary, look into the dictionary, and over the period of time, we understand and we हम उसको याद रखते हैं, we remember the meanings of different combinations. अस्तु प्रभुजी आमां. सनिवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्रमनोभिरामात् कौत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्. Someone can might say, oh, why not? It is Stri Vrajyeta. Why it is Puman? Womanly pluralization. But when it says Puman means Jiva. Okay, so please practice your tables, the dhatus, the sutras, and we'll resume in the next class. प्रभुजी प्रभु अहम् Mm-hmm. अहम् अपि पृच्छितुम् इच्छामि अपि
तत् लाइक वयं चित्ती संज्ञे इति धातु हम्म अक, अकरोत् अकरोत् that if चेत the dhatu परस्मैपद इति then तरहि कथं कथं वयं फॉर्म भावकर्मणो आत्मपदे हम्म हम्म अस्तु। यद्यपि कोऽपि धातुः परस्मैपदी भवति, तर्हि अपि तदानीमपि तस्य धातोः आत्मपदस्य रूपाणि अपि कर्तव्यानि। किं कारणं? यदि धातुः सकर्मकः अस्ति, यदि धातुः सकर्मकः अस्ति तर्हि टेक्स्ट द कर्म यदि धातुः सकर्मकः अस्ति तर्हि आत्मपदम् अपि कर्तव्यम्। यदि अकर्मकः अस्ति तर्हि आत्मपदं न कर्तव्यम्। प्रभु जी संशयम अहम संशय में what is the difference between मतलब I know that sakarmakam means that which takes on the karma and akarmakam which doesn't take the karma, but how do we Mhm. in practical application how can we understand? Yeah, that's why no need to understand. Focus on forms, memorization. Okay, then Yeah, बाद में क्लियर right now होगा memorize फटाफट। बाद में क्लियर अभी होगा अभी मीनिंग्स पे इतना फोकस, दैट्स वाई जीव गोस्वामी ने चैप्टर 4 में मीनिंग्स रखे हैं, चैप्टर 4 में यूजेज रखे हैं, चैप्टर 3 में सिर्फ आप फॉर्म्स को बनाइए और याद कीजिए। ओके हाँ हाँ, अभी आप मीनिंग पे थोड़ा सा कम सोचिए, मैं ये नहीं कहूंगा मत सोचिए, सोचिए पर बहुत कम। अभी आप रूप को जितना ज्यादा याद कर सकते हैं उनको अच्छे से सब याद कर लीजिए। ओके डन हाँ प्रभु जी हाँ, तो आप रूप को याद करने पे अभी प्रयास मेहनत डालिए, क्योंकि अगर जीव गोस्वामी को मीनिंग्स फोकस रखना था तो वो अभी रख सकते थे ना। उन्होंने हम्म अगले चैप्टर में मीनिंग्स रखे हैं, या जो यूजेज है, जो उनका प्रयोग है। तो इसलिए अभी हम्म याद कीजिए। जितने जितने हम धातु करते जा रहे हैं फटाफट सबको टेबल से याद कर लीजिए। और वो एक्चुअली याद करने की जरूरत नहीं है, वो एक दो धातु शुरू के याद हो गए तो बाकी से आप अपने आप लूप में आ जाते हैं, पर फिर भी थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ती है ना। जैसे स्फुटिर धातु हो गया, मंथ विलोडने हो गया, शिधु हो गया, शिधु गत्याम हो गया, शिधु शास्त्रे मांगल्य च हो गया, चित्त संज्ञाने भूसत्तायाम, कितने सारे धातु हो चुके हैं हमारे। तो उन सबके पूरे पूरे रूप याद होने चाहिए हमें। प्रभु जी एक्चुअली मैं इसलिए भी पूछना चाहता था बिकॉज मेरे पास एक किताब थी जो व्हेन आई वाज लाइक टेकिंग पाणिनी क्लासेस बिफोर दिस, तो जो टीचर थे उन्होंने रूप चंद्रिका नाम पुस्तकम इति दत्तम हम्म अ, अ, ततः अ, ततः अस्मिन् हम्म अ, तस्मिन् तस्मिन् देयर तत् तस्मिन् तत्र भावकर्मणोः प्रत्ययानि न सन्ति। हम्म दैट्स व्हाई आई थॉट मे बी भावकर्मणो इज नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज उधर वहां पे धातु हैं, इवन चित्त संज्ञानी वाज देयर, इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर अ फिजिकल बुक, अदरवाइज बस भावकर्मणो ही मिसिंग है उसमें। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि सकर्मक है तो लेता है, अकर्मक है तो नहीं लेते हैं। कर्मणि भाववाच्य तो देखो सब में होता ही है। ओके हाँ, भाववाच्य में तो कोई डाउट नहीं है, चाहे कर्मणि अकर्मक हो। हाँ, सिर्फ कर्मणि प्रयोग का आ जाता है कि अगर अकर्मक धातु है तो कर्मणि प्रयोग नहीं होगा। भाववाच्य तो फिर भी सब में हो गई। पर प्रभु जी अगर भाववाच्य अगर किसी में है, जैसे मान लो चित्ती संज्ञानी, अगर उसमें भाव है तो वो तो फिर भी भाव में प्रथम एक पुरुष ही लेगा,
तो why then other forms are there? तो चिति संज्ञाने देखना होगा क्या? चिति संज्ञाने सकर्मक है अकर्मक है, देखना होगा ना। ओके, वो देखना पड़ेगा। चेत चेतति चिति संज्ञाने टू बी कॉन्शियस। सत्ता देखूं वृद्धि प्रभु जी? विशुद्धि, सत्ता वृद्धि विशुद्धि शुद्धि शयन स्थान सने। आई थिंक चिति लुक्स लाइक सकर्मक। सकर्मक लग रहा है, आप देख लेना उसको। मैं भी देख चेतति संज्ञान होना, टू बी कॉन्शियस। हम्म, एनी हाउ, आप let's अभी see। मीनिंग्स पे थोड़ा सा कम फोकस दीजिए, अभी आप रूप याद कीजिए। आपको सारे धातु हो गए अभी तक याद? प्रभु जी बस भूतेश में रहता है। नहीं नहीं, सारे धातु हो गए, मंथ भी लौटने हो गए। नहीं प्रभु जी, नहीं हुआ अभी। मंथ में लोड नहीं। स्फुटिर विषय। नहीं प्रभु जी, दो रहते हैं। तो बस वही है ना, अभी आप मीनिंग्स में अटके हुए हैं, आप रूप याद कीजिए, अभी इनको मीनिंग से थोड़ा साइड कर दीजिए। डन प्रभु जी। आप अभी रूप याद करने हैं। डन हाँ, प्रभु तो जी, आई विल मीनिंग्स थोड़ा फोकस सा, प्रभु जी। मीनिंग्स को थोड़ा सा साइड लाइन करके अभी रूप पे फोकस कीजिए अगले 5 6 8 9 महीने, क्योंकि ये पूरा चैप्टर बहुत याद करना है इसमें। एंड प्रभु जी, अब मैंने जस्ट वैसे अभी देखा तो उसमें अकर्मक सेट बता रहा है। हो सकता है, मैं इसको एक बार फिर भी अपने टीचर से पूछूंगा। डन प्रभु जी। एंड प्रभु जी, इसको एक और आई डिस्कस। छोटा एक छोटा सा प्रश्न था, वो व्हाट्सएप पे मैंने भेजा था। आपने जो प्रश्न पूछा है वो मैंने आंसर दिया था, पर आपने फिर पूछा है कि वो गोविंद क्यों नहीं हुआ। क्योंकि यक है ना, यक में कित कपिल होते हैं, किच्चन किच्च कंसारी या कित कपिल, जो भी आप कहना चाहो। तो ईशस्य न यस गोविंद प्रभु। वृष्णिंदो कंसारीषु। डन प्रभु जी। प्रभु जी, हम्म। कई बार वो लेखा लग जाता है। ओके, ठीक है। विल धन्यवादम। रिज्यूम इन द नेक्स्ट क्लास। हरे धन्यवादम कृष्णा। कोटि अग्रे कोटि प्रभु जी। अग्रिम कक्षायां वयं मिलामः और मिलिष्यामः। हम्म, हरि Thanks. बोल, हरि ओम, नमो नमः। नमो नमः प्रभु जी। जय कृष्ण प्रभु जी। वंदे संस्कृत मातरम। जय तुम संस्कृतम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। वंदे संस्कृत मातरम। हरे कृष्ण। Hare Krishna. हरे कृष्ण।